इस आई थिंक जो है वो पिछले साल का भी जो है वो फिर वसूल हो जाता है उसी में। True, true, true. And I think so. This was the reason when we talked about, and I was very excited to tell you that, Azmi, let's hear about, men on this specific topic. And I'm really glad that you are as excited, as me to actually do this. Yep, 100% excited. So tell me, Azmin. I mean, and it's very weird or unusual that we have been doing this for past 2 to 3 years, but I never, asked from you or heard the story that why you do it. Like, I remember first time when you contacted me, it was COVID, and I was actually doing a breast cancer project for the Ministry of Health. So I was actually, quite surprised when you um, contacted me that you want to do a breast cancer awareness session. So, like, why do you do it? Uh, is it something personal or something from your experience? Um, could you share that with me and the audience? Yeah, sure. So the behind story regarding this sessions was like around 4 to 5 years back. One of my university mate, she was female, and her mother was diagnosed with this breast cancer, and she had like her father in family and brother, elder brothers, but उसने फिर भी जो है जब उनको पता चला तो they were like they contacted me क्योंकि मैं उस वक्त जो है not related to you can say कि who are like awareing people about the breast cancer वो एक normal सी NGOs थी which was working for the students. So जब वो मेरे पास आई and she was like हमें किसी को भी कोई information नहीं है and that's why you are part of an NGO अगर तुम्हें कुछ पता हो कि what is the next process कोई treatment या कोई डॉक्टर तुम सजेस्ट कर सको तो then मुझे समझ में आया ये बात कि if your family members don't have any information about it तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था कि चलो वो तो मेरी दोस्ती तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया बट सबके पास ये जो है यू कैन से कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु नोज अबाउट दिस इसकी हो ये जरूरी नहीं है सो द फर्स्ट पर्सन यू रीच आउट इज लाइक योर फैमिली मेंबर अगर वहां पे ही किसी को इन्फो नहीं है चाहे वो आपके फादर हो चाहे आपके ब्रदर हो क्योंकि हमारे यहाँ टिपिकली पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या होता है कि मैन इज हेड ऑफ फैमिली राइट सो अब जो वो कहेगा ना देन इज द थिंग अगर वो उसको ही नॉलेज नहीं होगी तो आगे चीजें बढ़ ही नहीं सकती बट समहाउ मैंने जो है उनकी हेल्प की थी और आई सजेस्टेड हर सम डॉक्टर्स और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा की जो ट्रीटमेंट वगैरह हुई और फिर वहां से वो चीजें उन डॉक्टर्स के थ्रू उनको गाइड हुई देन आई थॉट कि यार दिस इज अ लूप होल हम जो है सेशंस करवा लेते हैं कंपनीज में हम जो है अक्टूबर का पूरा मंथ मना लेते हैं बट थिंग इज अगर किसी फीमेल को ये चीज होती भी है सो वो कहेगी किससे शी विल डिस्कस फर्स्ट इन हर फैमिली तो ओके सॉरी सो मैं ये कह रहा था अगर फैमिली में किसी की होती भी है तो फर्स्ट जो होता है वो उसकी फैमिली से डिस्कशन होता है और अगर वहां पर ही उसे एक वॉल दिखा दी जाए कि इससे आगे जो है हम नहीं बढ़ सकते बिकॉज हमारे पास वो नॉलेज है ही नहीं तो वो चीज़ कभी आगे बढ़ती ही नहीं है फिर वो क्या होता है कि जब किसी को पता ही नहीं है तो वो अब चीज़ फिर आगे डिस्कस नहीं होती और जब डिस्कस नहीं होती तो फिर वो चीज़ जो है एक कैंसर जो है वो उस स्टेज पर आ जाता है कि जहाँ पे फिर वो चीज़ सारी जो है ना आपकी फजूल हो जाती है वो जो टाइम जो आप वेस्ट कर चुके हो जिसमें आप जो चाहे वो कर सकते थे उस चीज़ को बढ़ने से रोक सकते बट वो नहीं होता देन
आई स्टार्टेड डूइंग इंटरव्यूज। फिर मैंने जो है एक पूरा सा कोशिश की कि अपनी ऑडियंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ताकि ये होगा कि अगर मेरे पास एक छोटा सा चंक ऑडियंस का होगा, तो अगर मैं उसे एजुकेट कर देता हूँ इस बारे में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें, ये चंक अपनी फैमिली में जो है जाके एजुकेट करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमने ये कहा था कि मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि फीमेल्स के लिए एक अलहदा सेशन रखा जाता है। तो व्हाट वी डिड, हमारे एनजीओ के थ्रू हमने सबसे पहले जब ऑन ग्राउंड सेशन एक किया, हमने उसमें जो है, जो कॉर्पोरेट के जो उस कंपनी में जो है काम करते थे मेल्स, उनको भी जो है उस सेशन में इनवाइट किया। एंड टू मेक फील, जो हमारी फीमेल्स थी उनको कंफर्टेबल, हमने क्या किया कि नॉट जस्ट मैन, हमने उन मेंस की जो थी फैमिली, इवन उन जो फीमेल कॉर्पोरेट में जो काम कर रही थी उनकी भी फैमिली को, हमने उन सबको एक साथ बुलाया। एंड वी सेड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैन और जस्ट अ वुमेन, दिस शुड बी पार्ट ऑफ द एवरी फैमिली डिस्कशन। इसलिए हमने उनकी फैमिलीज को भी बुलाया। और फिर एक चीज समझ में आई उनको भी कि जब आपकी जो है फैमिली इसका पार्ट बनती है, तो वो भी इस रिगार्डिंग दिस इशू अवेयर होती है। एंड एज अ मैन, आपको इस चीज की अवेयरनेस मिलती है कि व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जब आपको एक चीज का पता चल जाए तो नाउ यू हैव टू टेक दिस टू द एंड। आपको बीमारी का पता चल जाता है आपकी फैमिली से, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द यू आर हेड ऑफ फैमिली। अगर आप वो माहौल, अगर आप खुद अवेयर नहीं होगे, अगर आप वो ऐसा माहौल नहीं बनाओगे कि जिसमें एक फैमिली मेंबर आपसे ये चीज डिस्कस कर सके, तो ये चीज का फिर सेशंस करने का फायदा ही नहीं हो अगर वो चीज नहीं हो रही। इसलिए हमने उन सबको बुलाया। एंड एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ये हुआ कि पीपल अप्रिशिएटेड दैट। और फिर हमने उसको कहा कि हम एक छोटी सी ऑडियंस को लेके, सिर्फ कॉर्पोरेट के बजाय हम इसे ऑनलाइन लेके जाते हैं। तो बट उसमें मेरे साथ किसी एनजीओ के साथ नहीं हो सका, तो आई डिड इंडिविजुअली। अब मैं फिर जो क्या है, हर साल जो है क्या करता हूँ, आई रीच आउट टू डॉक्टर्स लिंक्डइन और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम जो उनके साथ वीडियो इंटरव्यूज करते हैं। आई रिमेम्बर हमने जब पहला आपके साथ किया था मैंने, तो इट वाज अ वीडियो इंटरव्यू, और जिसमें हमने नॉर्मल सी जो है सिम्टम्स वगैरह की बात की थी। और एक सोशल मीडिया पे होता है ना कि यू आर नॉट बाउंडेड। इसमें क्या होता है कि जिसको भी जो है ना इंटरेस्ट होगा ना इस टॉपिक में, वो जरूर इस कॉन्वो का पार्ट बनेगा। चाहे वो एक बंदा हो या चाहे दो बंदे हो, वो इस कॉन्वो का जो है ना पार्ट जरूर बनेंगे। तो इससे ये होगा कि एक थोड़ा सा, एक बंदों को होता है ना, एक वो चीज है कि एक बंदा जो है ये अवेयरनेस सुन रहा है सामने बैठ के, तो उसको थोड़ा सा हो सकता है कभी अनकंफर्टेबल फील हो कि यार मैं इस कॉन्वो में, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बट लिंक्डइन पे जब ये ऑडियो पॉडकास्ट का सीन आया ना, तो इससे एक चीज जो है खत्म हो गई कि यू डोंट हैव टू लाइक फेस समवन। आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, आपके सवालात के जवाबात भी मिल रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ दिस। और आपको जो है, वैसे तो होना ही चाहिए, बट यू विल नॉट फील शेम एज वेल कि यार मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा तो टॉपिक ही नहीं है ये वो। तो डेट्स हाउ थिंग स्टार्टेड। और फिर मैंने आपके साथ भी सेशन किया, मैंने दूसरों के साथ भी सेशन किया। और जब इस बार जब आपने मुझे इस आइडिया के लिए कांटेक्ट किया, आई वाज अबाउट टू कांटेक्ट यू अगेन कि हम जो है दैट टिपिकल सेशन विच आई डू एवरी ईयर हम दोबारा करते हैं। क्योंकि आई फील पर्सनली कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। एंड ज्यादातर मैं कह रहा हूँ वुमेन्स में इतनी कमी नहीं है, बट जो हमारे मैन हैं उनमें ज्यादा कमी है। और अगर हम सिर्फ फीमेल को अवेयर करने के बजाय, उन्हें एजुकेट करने के बजाय, अगर हम मैन को करें ज्यादा एजुकेट, तो वो एक मैन जो है ना वो अपनी पूरी फैमिली को जो है एजुकेट कर रहा होगा। सो दैट्स वाज द थिंग आई डिड, जो मैंने लिंक्डइन के थ्रू करना चाहा। एंड आई एम ट्राइंग एवरी ईयर कि किसी न किसी तरह एटलीस्ट कुछ लोग को जो है मैं जरूर अवेयर करूँ हर ईयर। सो दैट्स हाउ थिंग स्टार्टेड। Thank you so much, Azmeen, for sharing your inspirational journey and how started these things. Um, yeah, so interestingly, you mentioned a very good thing. Uh,
when someone is going through this, they are diagnosed, या अ, थोड़ा सा शुबा भी होता है कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है. सो women actually share these things with their husbands, but not particularly with their brother or father. So वहां पे जो है वो थोड़ा गैप या break down है. So what do you think about that? Like, of course, to talk about these things with your husband is, I'm not saying that it's super easy, uh but still it's not that of big of a gap. But if there's a young girl, or let's say she doesn't have a partner or husband yet, so how can she can talk about this with her brother or um father, like, ठीक है, partner और husbands को तो हम कहते हैं, but what about the role of fathers and brothers, and even colleagues and uh, male friends. अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो घर का माहौल है ना, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। अगर आपके घर के माहौल में इस चीज को गलत समझा जाएगा ना, जहाँ पे ये चीजें बातें नहीं होती, या कभी कभार ये भी होता है कि यू डोंट डायरेक्टली टेल टू योर फादर, बट थ्रू योर मदर आप जो है वो चीज कन्वे करवाते हो अपने डैड या अपने भाई वगैरह को, और वो लाइक लीड ऑफ द फैमिली। बट अगर आपके घर में उस चीज की अवेयरनेस नहीं होगी या ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होगा ना, तो क्या होगा कि अगर आप मदर के थ्रू कन्वे भी करवाना चाहोगे तो आपकी मदर ही आपको वहां स्टॉप कर देगी, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाओ, जो बहुत ही गलत है और बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता भी है। तो इसी वजह से हम ये चीज को करते हैं कि जो सेशंस है ना, या जो भी अवेयरनेस है वो सिर्फ फीमेल्स तक नहीं होनी चाहिए। अगर इस इशू की सेंसिटिविटी को आपके फादर आपके ब्रदर नहीं समझेंगे ना, तो वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो उनको इस चीज के लिए मेक श्योर कराना कि प्रॉपर अवेयरनेस जाए, ये जरूरी है। देन एज अ हेड ऑफ फैमिली, एज अ मेल ऑफ फैमिली, then it's your duty कि you should create that environment in your house कि आपसे बोलते वक्त या आपसे डिस्कस करने के लिए किसी को वेट ना करना पड़े। यू शुड बी द मैन। जैसे अब मैं हूँ, अगर मैं सेशन करता हूँ, मुझे इतनी अवेयरनेस है सेशंस की, तो व्हाट आई डू कि मैं जो है इन सेशंस वगैरह में अपने फैमिली मेंबर्स को भी पार्ट बनाता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर रही, है मुझसे जो फीमेल हमारी फैमिली मेंबर्स है वो डायरेक्टली बात नहीं कर रही, बट दे आर पार्ट ऑफ माई सेशंस, सो दे नो कि इफ अल्लाह ना करे समथिंग्स हैपन, दे कैन डिस्कस विद मी बिकॉज आई एम डूइंग दिस एंड आई नो अबाउट दिस। जब एक चीज का हमारे फैमिली मेंबर में किसी को मालूम ही नहीं होगा, तो देन उससे जो है वो डिस्कस किया ही नहीं जाएगा। लेकिन जब हमें ये मालूम होगा कि सामने वाला भी जो है वो इस चीज को जानता है, इट्स फुली अवेयर अबाउट हिम, तो वो उस चीज को फिर जो है हमसे शेयर भी करेंगे, और फिर उसके लिए हमसे आगे जो फर्दर उसका प्रोसेस है उसके लिए हमसे कंसल्ट भी किया जाएगा। अब जैसे अब जो मेरी दोस्त थी, शी नोज कि मैं इस चीज में हूँ एंड आई एम बिट अवेयर ऑफ अबाउट इट, सो शी कॉन्टेक्टेड मी कि अगर मैं कोई डॉक्टर वगैरह सजेस्ट कर सकूँ या फर्दर कर सकूँ। अगर यही चीज उसे ये मालूम होती कि उसके घर में लोगों को ये चीजों का बारे में पता है, तो फर्स्ट जो है वो अपने घर वालों में से ही किसी से पूछती। तो दैट्स द थिंग, यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन योर हाउस एंड एज अ लीड ऑफ द फैमिली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके घर का हर फर्द इस चीज के बारे में अवेयर हो, साथ साथ आपके, और डिस्कस कर सके। ऐसा माहौल आपके घर में जो है बनाना है। True, you are right in that aspect, Azmeen. Um, but you see, we are talking about um, people from urban areas, family like us. So I think so that we are talking from a point of privilege, right?
because when you go to the rural areas, the situation is actually very different. See, um, when I used to work in the hospital, there was like these were the daily cases of the women that which wanted to um, pursue the treatment or get the chemo or surgery, but they couldn't do it just because the family and their men they didn't allow that, or simply they didn't have money, or in some of the cases they didn't want to spend money. So like, do you have some kind of idea to actually how to educate those men, because you work in the community and social listening thing? For example, अगर हम किसी अंडर privileged area में जाके we do a session, so I believe that our conversation, and actually your conversation would be very much different जो अब हम अभी बात कर रहे हैं, because our audience is a very educated one. So like, do you have any kind of thought process about that like if um I will take you to some kachi abadi in Islamabad, or some a remote village in Sindh, then how would Azmeen would educate the men there? अच्छा, हमारे साथ ना ये इशू हमने काफ़ी फेस किया। सो जब हम ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ करते थे ना, तो जब हम जो है रूरल एरियाज में जाते थे मोस्टली इंटीरियर से, तो हमारे साथ इशू ये होता था कि वन वाज द लैंग्वेज बैरियर, एंड Mm. सेकंड थिंग व्हाट वी आइडेंटिफाइड ना, कि अगर हम कुछ चीज़ बोल भी रहे हैं ना, सो दे वर लाइक कि यार चलो ये तो मतलब शहर के लोग हैं, इनके यहाँ ऐसा होता होगा, ये होगा वो होगा। सो दे वर लाइक दैट थिंग। सो व्हाट वी डिड कि हमने जो है उनकी ही जो लोकेलिटी थी वहाँ से उनके अपने लोगों में से व्हाट वी डिड कि हमने कुछ लोगों को जिनमें हमें थोड़ा सा पोटेंशियल नजर आया सीखने का ये इस बारे में, हमने उनको अलग किया एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू एजुकेट देम। और हमने क्या किया कि उन्हें फुली अवेयर कराया हर चीज़ के मुताबिक। और सरप्राइजिंगली ये हुआ कि फिर जब उन्होंने अपने जो छोटे मोटे गांव में हैं, जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि यार दिस इज द गाय जो हम में से ही है, जो ये चीज़ हमें बता रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने जब हम अवेयर कर रहे थे उन कुछ लोगों को, हम उन्हें डिफरेंट जो है यहाँ पे जो सिटीज में लाके हमने उनसे जो इसके सर्वाइवर्स हैं उनके उनसे बातचीत करवाई, उन्हें हमने दिखाया ट्रीटमेंट वगैरह। तो फुली अवेयर करके जब हमने ये चीज़ देखी कि हमारी बात से वो इतना कन्वे नहीं हुए थे जितना जब उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक चीज़ को अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया, पूरी चीज़ को उस पूरी लाइफ साइकिल को जिया एक किसी पेशेंट के साथ। तो जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ अपने लोगों के साथ शेयर किया, तो पीपल वर मोर लाइकली टू एंगेज विद देम। फिर हमसे लोगों ने उन्हीं से ही जो फिर और सवाल जानना शुरू किए, तो थोड़ा सा उनके अंदर जो है ना इंटरेस्ट काफी उसके थ्रू है ना बढ़ने लगा कि हम और भी जाने उनसे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा था जो उन्हीं में से थे लोग। तो दिस वाज द थिंग विच वी क्रैक। That's a great one, Azmi. Like, actually, taking people with lived experiences to those communities and get to, hear the stories from them. So that's actually a great insight. कि जो लोग एक्चुअली इस जर्नी से और इस सारे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, सो why not listen from them? So I guess that's a very important point when it comes to
advocacy, community engagement, especially when you try to, advocate for things for other gender which the opposite gender, couldn't relate to. So, like, from the relation, just a thing, came to my mind that uh, ये तो हम तब की बात कर रहे हैं ना कि खुदा ना खास्ता, when some patient is diagnosed, um या शुभ भी होता है कि it may be something, but if we, take 2 or 3 steps back to actually, the diagnosis or annual mammograms or um, ultrasound. So, like, how do you think that in our digital advocacy we can actually, divert our messages towards men? Because, अगर हम अपने सारे इश्तहारात या एड्स देखते हैं, so it's every time it's, directed towards women. Obviously, it makes sense that they should, check themselves or do the annual mammograms and, that sort of thing. But what about if we, make ads or started making some digital campaign around, like, maybe that how men can chip in. Maybe father is actually scheduling annual mammogram for their daughters or wives, or partners husband are doing the same, or brother are doing the same from their sister. I mean, this is just, one idea, but what do you think? Because this is actually, you are an expert in this. I totally agree with you. uh, हमारे यहाँ क्या इशू हो गया है कि every campaign is mostly is like it's a woman cancer, it's a woman cancer. But I personally think it's not just a woman cancer, it's a society cancer. एंड अगर हम जो है इसको सिर्फ एक ही तरफ करके, नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड, इसको एक ही तरफ उसी कॉन्वो में जाते हुए हम जो ऐसे अगर पुशअप करते रहेंगे, तो उसमें ये चीज होगी कि हम एक पार्ट को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। हम एक चीज अवेयरनेस तो करते जा रहे हैं, बट हम उस अवेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप को फुली एग्जीक्यूट कराने की जिसकी जिम्मेदारी है, जो कर सकता है, हम उसकी तरफ उस चीज को हैमर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो है एक चीज कही थी कि जैसे हमने जो है ना, हमारे यहाँ बहुत सी कंपनीज में भी देखा जाता है कि पिंक रिबन डे जो है मनाया जाता है, तो उसमें मोस्टली दिखाई जाती है फीमेल्स बना रही हैं। तो इन चीजों से हटके अगर हम डिजिटल का सही तरीके से यूज करें, we should let people know कि yeah, कि we also invited our male participants in this session as well, their families as well। हम उस चीज को लोगों को दिखाएं तो लोगों को इस चीज की भी ज्यादा समझ पड़ेगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वुमेन, इट्स अबाउट एवरी वन ऑफ अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को जड़ से खत्म कैसे करना है। इसके लिए क्या होता है कि हमें इस चीज को बहुत ज्यादा हैमर करना चाहिए कि सबसे पहले तो एक, वी हैव टू क्रिएट दैट environment where we encourage open conversations about health, जहाँ पे जो है मेन मैन ऑफ द हाउस जो है इस चीज को इम्पोर्टेंस दे, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को, और थोड़ा सा सेल्फ एग्जाम की तरफ भी अपने फैमिली जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको उस चीज को गाइड करे। और खुद भी हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ अक्टूबर से इस चीज को जो है यू कैन से कि एक हमने कर दिया है लॉक, बट हमें चाहिए कि नॉट जस्ट इन अक्टूबर, एवरी मंथ हमें जो है इस चीज को जो है हमें चेकअप्स की तरफ जाना चाहिए। एंड सिर्फ अक्टूबर के दिनों में ही हमें इस चीज की एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। एवरी ईयर हमें जो है पूरा साल इस चीज को जो है
ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। एंड एक थोड़ा सा लाइफ स्टाइल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप बेटर लाइफ है जो है हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है अगर अपने घर में प्रमोट करेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि आपके चांसेस भी जो है ना कैंसर के, वो आपको थोड़े से कम हो जाते हैं। और ये जो है बहुत अच्छे से जो है ना मैन कर सकते हैं अगर वो खुद इस तरीके का लाइफस्टाइल घर में अपने जो है सबसे करवाएंगे, क्योंकि दे आर द हेड ऑफ द फैमिली। तो अगर वो ये चीज़ करवाएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैमिली जो है इस चीज़ को जो है ना आपके जो है अवेयर कर सकेगी। फिर दूसरी बात है कि हमारे यहाँ क्या इशू होता है कि हम जैसे रिलेटेड हो गए। अगर जैसे हम कॉर्पोरेट की बात करें तो ऑफिस में अगर सेशन होगा तो हम वो अटेंड करेंगे। इसके अलावा पीपल आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू अटेंड इंडिविजुअली, कि कहीं सेशन हो रहा है तो हम जो है पार्ट करें। अब बहुत सी हमने देखा है कि जो हेल्थ या फार्मा से रिलेटेड कंपनीज होती हैं वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ करवाती हैं, फ्री जो है एग्जामिनेशन, फ्री अवेयरनेस वगैरह के सेशंस वगैरह भी ऑन ग्राउंड हो रहे होते हैं। बट वही बात हो जाती है कि अगर जो घर का मैन है वो ही इस चीज़ के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा या इतना अवेयरनेस नहीं लेगा, तो वो अपनी फैमिली को उस कैंप का कभी हिस्सा बनाएगा ही नहीं। तो इसलिए चाहिए कि मेंस को भी नॉट जस्ट कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही, लेकिन इसके अलावा भी जितना हो सके इसके रिलेटेड एजुकेशन हासिल करें और अपने अपने खुद को भी अवेयर करें एंड देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल। तो ना सिर्फ इसको ये समझा जाएगा इट्स जस्ट अ वुमेन रिलेटेड थिंग, इट्स अ society related thing, and we all are responsible for this. I completely agree with this, Azmeen. And you mentioned a very interesting point that men should educate themselves and participate in on-ground or community events other than the corporate ones. But I think, um like this is my experience. There are not many um avenues to actually get that material or access और सारा कुछ। जैसे आपने बात की कम्युनिटीज में लैंग्वेज बैरियर जो है वो बहुत बड़ा बैरियर है। सो आई गेस there's a there's more need to have those IEC materials in their languages and actually direct those language towards men के like औरतों को तो कहा जाता है ना कि आप सालाना मेमोग्राम कराएं। बट व्हाट अबाउट इफ वी राइट इट लाइक के आप अपने घर की खवातीन को जो है वो मेमोग्राम के लिए लेके जाएं सालाना। सो दैट दोज काइंड्स ऑफ थिंग। व्हाट डू यू थिंक लाइक वुड इट दिस वर्क लाइक दैट वे या फिर देर कुड बी के हम क्यों लेके जाएं this is not you know our disease or something like that, because there's Uh, also like this thought ke now why they are directing everything towards men. So what have you say about this? अच्छा, आई टोटली एग्री विद यू। जो हमारा कम्युनिकेशन का वे है ना उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एंड इट शुड बी मोर टुवर्ड्स लाइक मेकिंग मैन रियलाइज दैट दिस इज नॉट one time thing, that we are highlighting this कि just because कि शायद हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को तो जो है, you guys can hear me right? Yes, we can, Azmi, continue. Okay, so I was saying कि इस तरीके से कहना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वन टाइम थिंग कि आपने जो है इसी चीज के लिए लेके जाना है। व्हाट आवर कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन शुड बी कि this is your responsibility, not just to take your loved one for this mammogram, or is to make your family, your loved ones, their life healthy। तो ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ मैन ऑफ द फैमिली कि आपकी फैमिली जो हो वो हेल्दी हो,
and you have to take care of them and their health. सेकंड चीज़ इज जो हमने मोस्टली, क्योंकि जो अभी दौर चल रहा है सोशल मीडिया थिंग, तो इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा जो हुई थी हमारे साथ। उसमें ये हुआ था कि हम जो डिजिटल एक कैंपेन चलाए थे रिगार्डिंग दिस अवेयरनेस सेशन। तो व्हाट वी वर डूइंग कि हम जो है उसमें टारगेट कर रहे थे रिगार्डिंग जो है यू कैन से कि इंटीरियर वगैरह कराची वगैरह लाइक सिंध को हम पूरा टारगेट कर रहे थे थ्रू सोशल मीडिया एड्स। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास ना इतनी रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे, ना इंगेजमेंट आ रही थी, ना लोगों के सवालात आ रहे थे। तो और वो मोस्टली क्या था कि इंग्लिश एंड उर्दू में थे हमारे जितने भी विजुअल्स थे। तो व्हाट वी डिड कि वी डिड अ बिट चेंज। हमने उसे लोकल लैंग्वेजेस जितनी भी थी ना उसमें हमारे विजुअल्स को जो है ना चेंज कर दिया सारे। So what we did Sindhi as well, and we did English, Urdu, we did in Balochi as well। हमने क्या किया वो सारे वीडियोस बनाए। फिर जब उस पे हमने रिस्पॉन्सेज देखे ना, तो वो हम वी वर टोटली अमेज्ड टू सी कि लोग उस पे जो है, एक तो पीपल वर अप्रिशिएटिंग दैट कि दैट वाज इन देयर लोकल लैंग्वेज और देयर प्रोविंशियल लैंग्वेज मदर टंग। सेकंड चीज़ कि उन्हें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही थी, क्योंकि हमने देखा है कि नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, अगर आप कहीं पे भी जाएँ तो ज़रूरी नहीं आपको जो है इंग्लिश जो है वो टोटली आती हो। और बहुत से हमने लोगों को देखा है जिनको पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी उर्दू नहीं आती। तो इस लैंग्वेज की वजह से इस उनकी मैं कहूँगा एक तरह से ज़रूरत कमी का लफ्ज़ अच्छा नहीं रहेगा, अगर मैं कहूँ कि चलें अगर उनकी कमी की वजह से, एक चीज़ की वजह से, ये उनकी गलती नहीं है कि उन्हें अवेयर ना किया जाए, just because they don't know language। if you are awareing someone तो you have to hit all these spots। आपने हर तरीके से उन्हें अवेयर करना है। you have to go with their languages, क्योंकि अगर आपने या तो आप अवेयर नहीं करें या तो आप अवेयर करें तो बिल्कुल प्रॉपरली हर स्पॉट को जो है टारगेट करें, हर पिन पॉइंट को टारगेट करें। तो दैट्स व्हाट द थिंग। एक तो कम्युनिकेशन हमने जो चेंज करी इट्स लाइक इट्स योर ड्यूटी to make your family lifestyle healthy। It's your purpose। And second, it should be in your mother tongue as well। अगर आप कोई कैंपेन डिजिटली कर रहे हैं तो it should be in your mother tongue। अगर तो आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश के थ्रू ही हो जाएगा तो आप फिर भी एक छोटे से चंक को हिट करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मैं उर्दू के थ्रू करूंगा तो भी छोटा सा चंक होगा। बट जब आप अपनी लैंग्वेजेस को जो है वास्ट कर देंगे तो आप एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को जो है ना हिट कर पाएंगे। Yes, you make a very interesting, point um, about customizing the digital or even community engagement campaigns as per the locality. But um, this is obviously a very deep rooted issue which is linked with patriarchy and misogyny and everything related to gender um, inequality. And I think so this is something which should be addressed systematically and at the national level, because this I have heard it like so many times कि ठीक है, आप कह देते हैं कि जी आप एनुअली आप मैमोग्राम्स कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, डायग्नोसिस है, फिर ट्रीटमेंट है, फिर सारा कुछ है, बट obviously all this comes with a cost. And we know that women are dependent financially on their head male of the family. So if Azmeen has to say or give some roadmap kind of things to policy makers, because
most policy makers are men as well. So from that lens, men to men, how would you convince them or even get to think them something plausible, that how to ease all these things so that the men relative of that woman girl, they don't have to uh, hear it कि हमारे पास तो पैसे नहीं है या इलाज बहुत महंगा है, मेमोग्राम के भी जो है वो पैसे नहीं है. सो या we don't want to spend money on that, because obviously cancer is not something very very cheap. ठीक, so उसका अच्छा खासा जो है वो खर्चा होता है. takes the toll on the family, financial, emotional situation. So what do you have to say about that? अच्छा है बिस्मा, ये आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि चाहे आप हो चाहे मैं हो या डिफरेंट एनजीओज हों, जो भी हो, Hmm. वो जिस स्केल पे कर रहे हैं और जिस स्केल पे ये चीज़ को अवेयरनेस को गवर्नमेंट कर सकती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स, वो हमसे बहुत ज़्यादा है. इन फर्स्ट स्टेप जो मुझे पर्सनली लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, उसमें क्या होता है कि देयर व्हेन, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट इनिशिएटिव हैं, दे हैव डिफरेंट कार्ड एज वेल. तो मुझे जो चीज़ लगती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप जब भी स्कूल में जाते हैं ना अपने बच्चों को एडमिशन वगैरह करवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि दे आस्क यू फॉर देयर मेडिकल कार्ड, कि बच्चा जो है उसको जो है सारे जो है आपके क्या कहते हैं उसे, सारे जो है मेडिकल जो है वो क्लियर है, सारी चीज़ें हैं. आई थिंक इसी तरीके से कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इट शुड बी पार्ट ऑफ योर बेसिक टेस्ट. जैसे अगर जो है गवर्नमेंट कुछ टेस्ट जो है फ्री दे रही है आपको, डेट यू कैन अवेल दिस, तो उसमें ये मेमोग्राम वगैरह जो है, ये चीज़ें ना जो इनिशियली आपकी स्क्रीनिंग में काम आती हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दैट लिस्ट. और गवर्नमेंट को ना सिर्फ ये, बल्कि इफ यू आर लाइक गोइंग इन एनी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी इस तरीके से कम्युनिकेशन को रखना चाहिए. क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में ज़रूरी नहीं है जो बंदा जो आ रहा है ना वो इसी चीज़ के लिए आ रहा हो, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए आ सकता है. और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में डिफरेंट चीज़ों के लिए. तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू स्पेसिफिकली अवेयर अबाउट दीज थिंग रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर थिंग. एंड उससे क्या होगा कि ना सिर्फ आप जो है उन्हें अवेयर कर रहे हो, आप वहाँ पे वो सहूलत भी उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो या विद मिनिमल चार्जेस दे रहे हो. तो इससे क्या होगा कि जो बंदा किसी चीज़ के लिए हॉस्पिटल में आ रहा है ना, तो वो उस चीज़ से अवेयर होके ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जो है ना घर जाएगा फिर सोचेगा नहीं. अगर वो उस चीज़ के लिए आ रहा है ना, उस चीज़ को वहाँ देखेगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो उस चीज़ को उसी वक्त करवा ले. क्योंकि हमारे क्या मेंटालिटी है कि यार दोबारा कौन आएगा इस चीज़ के लिए. वो जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हमें टारगेट करते हुए इस चीज़ को करना चाहिए कि जिस चीज़ को, यानी इसको ट्रीटमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ हम इसके बारे में अवेयरनेस भी दे रहे हैं. तो इससे ये होगा कि जब बंदा किसी और चीज़ के लिए आ रहा है, एक तो वो अवेयर भी हो रहा है, उसके साथ अगर फैमिली है या किसी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए, किसी पेशेंट से मिलने के लिए उसकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, कोई रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी उसी टाइम पे अवेयर भी हो रहे हैं. एंड दे हैव अ रोड मैप एज वेल कि यार वो यहाँ पे जो है उसके ट्रीटमेंट जो है या मेमोग्राम जो उसके साथ लिखा हुआ है वो चीज़ वो करवा भी सकते हैं. तो गवर्नमेंट इस लेवल पे बहुत अच्छे से कर सकती है. एंड दे कैन ऑल्सो पार्टनर विद शॉपिंग मॉल्स एज वेल, क्योंकि ये दोनों वो जगह है जहाँ पे आपका फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है. तो इन दोनों जगह पे यू कैन एड
डिजिटल पैनल्स एज वेल। और वहाँ पे जो है आप मॉल्स वगैरह में अब आए दिन हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की जो है वहाँ पे जो है अवेयरनेस के लिए आप एक स्टॉल वगैरह भी लगा सकते हैं विद द कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एट द मोमेंट आपको उसके बारे में अवेयरनेस भी मिल रही है और बेसिक चीज़ें या बेसिक टेस्ट वगैरह जो भी है वो भी आप ऑन द स्पॉट करवा सकते हो। तो यू कैन हिट बोथ ऑफ देम कि दोनों जगह पे फुटफॉल ज़्यादा है और एक कम टाइम में जो है आप ज़्यादा ऑडियंस को जो है वो कवर भी कर सकोगे। Excellent ideas, Azmeen. I really like the idea of the, शॉपिंग मॉल्स एंड जहाँ पे आपकी फुट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है एंड दी सेकंड वन यस technically breast cancer mammogram is a part of basic packages in Pakistan. बट वही बात है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फिर उनकी कमी आ जाती है एज मेमोग्राम मशीन इज अ एक्सपेंसिव वन सो नॉट एवरी हॉस्पिटल हैज़ दैट इस्लामाबाद में जो है वो सिर्फ आपके PIMS के pass and other the maybe the big hospitals, but as PIMS is like is a government one tertiary care hospital, so uh, वहाँ पे जो है वो बड़ा मुश्किल है कि आप जो है ना वो फिर पूरे पाकिस्तान के जो केसेस हैं वो वहाँ पे आप केटर करें बट जो उनका नया ब्रेस्ट कैंसर वाला सेंटर है दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी ग्रेट जॉब बट बात फिर वो ये आ जाती है ना कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट अगेन अक्टूबर this should be like part of our our conversations our daily conversations um सबके साथ because we will see कि the moment October goes, all things will die down. So maybe it could be yearly or the daily um, telephonic messages or quarterly or monthly campaigns type of things so that the momentum goes on because it's actually mind-boggling that 80% of women in Pakistan they they are actually having breast cancer and Pakistan has the highest breast cancer incidence rate in all Asia. So this is actually a very alarming situation and एक चीज जो इस सारी चीजों को जो है वो स्लो डाउन कर सकती है इज अर्ली डिटेक्शन एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट the government and policies and advocacy and community engagement is just bits and pieces of all the things कि communications हमने अपनी कैसे जो है वो डायरेक्ट करनी है in a better way in holistic way so if Azmeen has to design a advocacy campaign for men what do you think could be the bits and parts of the campaign uh मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स ना कि अच्छा I would add this and this to be actually fruitful and as I'm a man so uh, I know that these kinds of messages or visuals would resonate more with my fellow gender. So yeah, I would like to hear from you on that. सो वेरी गुड क्वेश्चन। जो इससे पहले जो हमारे हॉस्पिटल की बात हुई थी कि हम जो है कि पिम्स में है तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि गवर्नमेंट जो इस चीज़ को लार्ज स्केल पे कर सकती है।
क्योंकि अब एज अ इंडिविजुअल या कोई एनजीओ इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से कोई एक मशीन के लिए भी आई थिंक सो एग्री ना करे, बट गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ के लिए हो सकता है कि आप डिफरेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे इसकी सहूलत को जो है यकीनी बनाए। एंड इफ मैं जो है अगर इस चीज़ को चाहूँगा तो मैं इसमें यही कहूँगा कि हमें जो सेलिब्रिटीज है ना उनको पहले जो है इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत से देखा है ना कि इफ मैं जो हमने पहले बात कही थी ना कि हमने अगर उनसे कहने वाला भी वही होगा ना तो वो बात जो है ना काफी असर करेगी। हमारे बहुत से सेशंस में क्या होता है कि अगर फीमेल्स वगैरह के सेशंस वगैरह भी रखें तो उसमें जो मेडिकल प्रोफेशनल या हम जिसको अवेयरनेस के लिए बुलाते हैं वो मोस्ट लाइकली फीमेल को ही बुलाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। यू कैन इनवाइट बोथ ऑफ देम, आप जो है मेल भी मेडिकल प्रोफेशनल और जो फीमेल को भी दोनों को बुलाएं साथ। एंड इस चीज को जो है टारगेट इस तरीके से कहा जाए कि व्हेन यू आर टारगेटिंग मैन, तो हमें जो है ना हमारे यहाँ जो इसको टारगेट करने के लिए जो हमारे यहाँ यू कैन से कि जो मर्दानगी की डेफिनेशन जो है ना उसको इस तरफ चेंज किया जाए कि असल जो है ना मर्द एज अ फैमिली मैन वो वही है जो अपनी फैमिली का जो है ना वो ख्याल रखे। एंड इसमें जो आपकी जो है ज़्यादा मर्दानगी है कि हाउ यू ट्रीट योर फैमिली एंड हाउ ट्रीट योर देयर हेल्थ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से जो है मैसेज पहुंचाने में जो है हेल्प करेगी। And it's not just like making them feel guilt or someone, it's just like making them aware of what their duties are and what their duties are related to their families. So I would highly recommend कि इसमें ना सिर्फ जो है आम लोगों या एनजीओ वगैरह को आना चाहिए बट ऑल्सो जो हमारे सेलिब्रिटीज वगैरह हैं पाकिस्तान की, दे हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, पीपल लाइक blindly follow them। तो उनको भी इस चीज को जो है ना आगे करना चाहिए। एंड ना ही सिर्फ अक्टूबर में, दे हैव टू लाइक कन्वे दिस मैसेज ड्यूरिंग द ईयर और गवर्नमेंट लेवल पे भी, क्योंकि जो है अगर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप चाहें तो आप उन सेलिब्रिटीज को भी इंक्लूड करवा सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग थ्रू डिफरेंट देयर हॉस्पिटल नेटवर्क, देयर मेडिकल प्रोफेशनल नेटवर्क्स। तो ये चीज काफी हद तक जो है ना मैन टू मैन जो टॉक होगी ना उस पर जो है काफी असर करेगी। एंड आई एम श्योर कि इससे काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी निकलेंगे। Very actually, I didn't want to, go towards toxic masculinity and positive masculinity thing, but it's very interesting that you actually, connected all this to that concept that, maybe we could actually, link it with redefining masculinity as well. So, and that's also a very good point and observant one, that yes, in every breast cancer event we just see uh, female doctors and female advocates, but I think so it's high time that we actually include men too. So, and I think so this is that is why I actually start this uh, podcast to hear their uh, perception and their perspective, that what are the gaps, like how we can connect to them. And actually it's it's about, obviously, you guys male are allies, right? It's not like uh we against you. So that is actually very interesting, that to actually include a component of healthy and positive masculinity in breast cancer uh, awareness programs for men.
So thank you for that. And um, we just have 5 minutes, and I don't know where that hour passed by. So we are actually open to questions from our audience. If someone want to ask, they can raise their hand, and we can invite them in our And podcast if you as well. guys have any feedback as well related to Oh upcoming yes. podcast or related to this podcast, you can share with us too as well. Yes, yes, definitely. And any last messages, Azmi? Like, if I would say that what should we, um, take home? What should be the take home messages for our this conversation today? What could be, those points? Uh, Malay's point would be like, don't associate this cancer with just a female thing. This cancer is for society, and we all have to play our role in a point that we can do betterment for this society and to help people around us to get more aware and get treated them. Now, I think we have one question. Fiza has raised her hand. Uh, yes, yes, Fiza, let me allow you to speak. Hello, can you hear me? Yes, Fiza, we can hear you. How are you? I am good. How are you guys? Oh, we are good. We are having a great time. Thank you so much for such an insightful conversation, and it's actually great to hear from someone who's actually working on the ground level, on the grassroots level. And I just have this one question, uh, because I have actually faced this issue with whenever I am talking to someone from my from my village, from my hometown. So when we're talking about these things, people often get offended, and they make it an issue of culturally in. Oh, they say, oh, this is culturally inappropriate to talk about this, or like talk about this openly. Or even though I am very much vigilant, and not vigilant, I would say, like, very mindful to use the correct words with them, but if still they might, they often get offended. So Azmeen, how would you recommend in such situations when you're talking to someone who might get offended and make it an issue, and also I have to talk to them on their level. So how would you recommend to tackle this issue? Thank you. अच्छा, आई वुड से कि जब भी जो है इस तरीके के इश्यूज आते हैं ना, वैसे तो जब भी इश्यूज आते हैं ना, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज फ्रॉम those people who don't want to accept that or don't want to accept their responsibility towards their family. तो इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि when you are talking to them ना, uh, do what you do is like go with a team. अ, हमें क्या होता है कि ज़्यादातर जब ये लोग क्या होता है कि जब फीमेल आर्ट होगी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे वांट कि एक तो हमें कोई ये फीमेल बता रही है, हमें उसको जो है ना सुनना नहीं है। सो वो एक ईगो पे एक चीज़ आ जाती है। तो व्हाट यू डू कि हमेशा जब भी, क्योंकि आप जो है वर्ड सही यूज़ कर रहे हो, और जब इस तरीके की चीज़ आती है ना, तो ऑलवेज गो विद अ मैन। तो उसमें क्या होता है कि जब ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हैं ना, तो दोनों पर्सपेक्टिव, जब दोनों लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे ना कि एक फीमेल जो बता भी रही है और साथ में मेल भी है जो भी बता रहे हैं, तो इससे वो चीज जो है ना ज्यादा कनेक्ट में आएगी कि दोनों लोग जो बात कर रहे हैं डिफरेंट जेंडर की बात कर रहे हैं बट बात एक ही कर रहे हैं। और फिर वो चीज ना दोनों को समझ में आती है कि ये दोनों लोग बात सेम कर रहे हैं, दे हैव अ डिफरेंट जेंडर, और ये दोनों खड़े होकर इस चीज बात भी कर रहे हैं। तो वो एक चीज उनको रिलेटेबल लगती है लोगों को कि ये डिफरेंट जेंडर जो है दोनों बात कर रहे हैं, और फिर वो बात थोड़ा बेहतर तरीके से जो है ना समझ में भी आना लोगों को शुरू होती है। फिर वो इस चीज को है ना उस वे में टैकल नहीं करते कि इट्स अगेंस्ट द कल्चर और लाइक थिंग।
इससे ये चीज़ की जो है आसानी हो जाती है, फिर वो बात आपकी बहुत अच्छे से सुनते भी हैं। पहले तो वही चीज़ है, इस चीज़ को अगर कल्चर के थ्रू रहेंगे वो बात सुनना ही नहीं चाहते, अगर वो बात सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। तो इससे क्या होता है कि जब दोनों जेंडर्स आपके सामने खड़े होंगे तो वो उस चीज़ को बात को सुनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और जब वो सुनेंगे तो वो समझेंगे भी, और जब समझेंगे तो उस पर चांसेस कि उस पर अमल भी करें। If Bisma, you want to add something regarding this? Yes, thank you so much, Azmin, actually, and thank you, Fiza, for your question. That got me thinking that yes, one, uh, the advocacy or community mobilizers, the team should be, gender diverse, and actually that got me thinking, and I would like to ask you, Azmin, that would be, my last question, that what about the resistance from the from the community men to men, like what is there a judgment or that sort of thing, or have you experienced it yourself, like you know some of your friends would say ke Azmeen, why you are doing things or breast cancer, this has nothing to do with you. So like women is something else, but to face the resistance from your own uh gender, like have you experienced this in your work so far, and if yes, uh, how would you able to handle that? ये चीज़ मैंने स्टार्ट में काफ़ी इशू जो है वो फेस किया था, नॉट जस्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड ऑल। जब मैं किसी को सेशन के लिए जो है इनवाइट करता था, तो सरप्राइजिंगली फीमेल्स जब भी मेडिकल प्रोफेशन को अप्लाई करता था तो दे यूजुअली आस्क मी कि व्हाट आर योर ऑडियंस, इज जस्ट लाइक स्पेसिफिक फीमेल या जो है डाइवर्स है, एंड व्हेन आई से कि इट्स ओपन टू ऑल, तो दे वर लाइक अ बिट हेजिटेंट कि देन जो है आप किसी और से कांटेक्ट कर लें, जो है ना हम नहीं आ पाएंगे। एंड somehow some of like them were like is there any other female as well in the panel or just you, तो वो चीज़ भी उनको काफ़ी हेजिटेंट फील होती थी, बट आई पर्सनली थिंक कि देयर आर अदर पीपल एज वेल जो इस चीज़ से आगे भी सोचते हैं, तो इस चीज़ से फिर मैं रुका नहीं। अगर कोई एक मुझे मना करता है तो आई नो कि मैं किसी और के पास जाऊंगा, अगर दूसरा भी जो है मुझे मना करेगा तो मैं किसी तीसरे के पास जाऊंगा, क्योंकि व्हेन आई हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू डू दिस थिंग, तो अब उसमें मुश्किल तो चीज़ें आएंगी। इट इज़ द वे दैट हाउ यू टैकल देम, और या फिर आप जो है उस चीज़ को एक्सक्यूज बना के चीज़ों को रोकते हैं। तो दैट वाज़न्ट थिंक फॉर मी कि भाई मैं जो है इस चीज़ को रुक जाऊं। एंड फिर जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट करें, देन आई कॉन्टेक्टेड यू, एंड सरप्राइजिंगली मुझे ये भी हुआ कि आपने इस तरीके की कोई चीज़ मुझसे नहीं पूछी थी। एंड बट नाउ आई फील कि मैं जो है नॉट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट मैं अभी भी कहूँगा कि मैं डिजिटल पे ये चीज़ें देख रहा हूँ कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। अभी भी कुछ लोग हैं जो पैनल में इसको जो है काफ़ी जो है कहते हैं कि देयर शुड बी फीमेल एज वेल इन पैनल, बट मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। आई थिंक कि ये चीज़ फीमेल मेल से अलग की बात है, ये इससे कहीं ज़्यादा ऊपर की बात है। इट्स अबाउट टू एजुकेटिंग द सोसाइटी, तो इससे नहीं रुकना चाहिए। और हाँ, देखो मुश्किलात तो आती रहती हैं, मुश्किलात किस चीज़ में नहीं आएंगी। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो यू हैव टू डू इट टिल द एंड, वरना तो जो है आपको इस चीज़ की शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। Great points, Azmeen. And yes, I can understand their concerns as well, because we live in in the society which in which talking about these things are still stigma and taboo. And I know I said that that was my last question, but okay, this is actually my last question because we are above time. That do you see any change in your male friends community, your male family members जो आपको देख के आगे आए हों कि हम भी इस बारे में बात करते हैं, या even in their personal lives, yeah, with
their wives and sisters and uh, daughters के उनके रवैये में कोई तब्दीली आई हो, they have started talking about it, or actually even telling their mothers के uh, you should all go for a mammogram या checkup या इस तरह की कोई चीज. So have you see or experience that kind of change yet? ये चीज मैंने काफी देखा है फ्रॉम स्टार्टिंग सेशंस. और पहले ये होता था कि वी हैव टू टेल देम पीपल कि डू कम विद योर फैमिली एंड ऑल. तो मोस्टली क्या होता था, हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो मोस्टली जो है हमारे सेशन का पार्ट बनते थे. देन आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने ये देखा कि उनकी फैमिलीज में भी जो है वो चीज़ें आने लगी. एंड दे ऑल्सो व्हाट दे डू कि कभी कभार क्या होता था कि सेशन में जो है वो क्वेश्चंस वगैरह they were hesitant to ask. So what they do कि अपने घर में से वो सवाल पूछ के फिर वो हमें भेज देते थे, व्हाट्सएप कर देते थे या प्राइवेटली इनबॉक्स कर देते थे, तो वी कैन आस्क देम विद अवर मेडिकल प्रोफेशनल, या हम उनसे कनेक्ट करवा देते थे. सेकंड चीज़ ये हुई कि मेरे दोस्तों वगैरह में व्हाट आई डिड कि अब जाहिर सी बात है, अब मैं किसी को अपने दोस्तों में कहूँगा तो दे वुड लाइक यार सेशन नहीं अटेंड कर रहे, मतलब नहीं कर रहे, दोस्ती यारी में नहीं होता. सो व्हाट आई डू कि अब जैसे जब मैं भी जो है ना सेशन करने जाता हूँ ना, तो मैं उन्हें भी जो है ना हैमर करता हूँ कि डू लेट मी नो कि अगर तुम्हारे किसी जो है ना क्या कहते हैं किसी सर्कल में कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो, आई नीड दैट. और मैं खुद भी उनसे बात नहीं करता. आई एम नॉट जस्ट लाइक कि यार उसका कांटेक्ट मुझे दे देना. आई एम जस्ट लाइक कि तुम उससे बात करो कि दिस इज द सेशन एंड दिस विल बी द क्वेश्चन. थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो कि जब वो मेरे लिए किसी और से सेशन पे बात कर रहे हैं तो दे वर लाइक यार अगर कोई हमसे सामने से कोई चीज पूछेगा तो हमें भी थोड़ी सी इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि हम उससे कम से कम कॉन्वो तो कर सकें. सो व्हाट आई डिड, और उनके थ्रू फिर मैं जो है ना कॉन्टेक्ट वगैरह को जो है रीच आउट करता हूँ, वो मेरे लिए करते हैं. एंड दे आस्क मी फॉर, और जो है वो सारी चीज़ें ना कि हमें सेशन जो है वो करना पाना है एंड अजमीन विल बी द होस्ट. और फिर वो मेरे बिहाफ पे सबसे बात करते हैं. इससे ये होता है कि नाउ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट एज वेल. अब इसमें ये होता है कि वो कभी कभार ये भी बोलते हैं कि नेक्स्ट सेशन आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताना. तो थिंग्स आर चेंजिंग. इट विल टेक टाइम बट या चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं. That is a very brilliant way to do things, Azmeen, and I'm sure this has given quite some ideas to our audience as well, who works in community engagement, social listening, and overall public health. So, yeah, we are above 10 minutes. So, thank you so much, Azmeen. And seriously, we could talk a whole day about this, me and you. But I think so for now, there are so many great things we are taking from this conversation, and I'm really looking forward to actually, implementing some of those things in GHC next campaign for involving um, men. So thank you so much, Azmeen, for your time, for sharing, your journey, your experiences, your ideas, and I'm very, very, grateful that you have taken the time to talk to all of us. So, thank you so much. Thanks to you, Bisma, for organizing this and reaching out to me for this exciting topic. It was a lovely session for me as well. I learned a lot from your experiences as well. And I'm sure कि आगे भी इस तरीके के बेहतरीन सेशंस जो हैं हमें देखने को मिलेंगे आपकी तरफ से. And thank you so much for inviting me for this session. Loved it. Thank you, Azmeen. And yes, so we are going offline for now. And stay tuned for our next
episodes which we are planning to airing in November. So yes, stay tuned. Follow our socials and drop any messages, any feedback which you have, for this podcast. So have a great evening, folks. Take care and bye bye.